Okay. So, hello everyone. I'm your Sudipta ma'am, welcoming you all to Vedang Civil Services, powered by Vedang Institute of Technology. Tell me, how are you everyone? Hope समस्ते बढ़िया थिबो, समस्ते प्रिपरेशन भी बढ़िया के चली थिबो. तो आज डिस्कशन आमे करिबा किछि इंपोर्टेंट टॉपिक्स जेमिति म तमानन कहूची MCQs म एबे करूची तमानकर एटा कि प्री पे इंपोर्टेंट बट मेंस पर्सपेक्टिव रु नेक्स्ट क्लास रु आपनकर किछिटा मेंस क्लास रहिबो किछिटा प्रीलिम्स मिसा मिसा आपनकर रहिबो. ठीक अछि. ओके. द टॉपिक फास्ट देखो कोन अछि क्वेश्चंस. बिफोर दैट आपण माने देखि दियंतु ओडिशा सिविल सर्विस रो एग्जामिनेशन द विश्वास बैच पई आपण माने OCS प्री 2025-26 जोटा के एबे हमर प्रिपरेशन मु करूछि आपण मानकर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पई जोटा के अपकमिंग आपनकर आसीबा को जाउछि. तो 1 year वैलिडिटी सहित 6999 होजी प्राइस. विश्वास बैच प्री प्लस मेंस 2025-26 दिस इज जस्ट प्री, दिस इज प्री एंड मेंस मिसी के आपनकर होची 1.5 वर्ष वैलिडिटी ता सहित 11999 होजी प्राइस. Apart from that, the mains batch उटा आपण माने प्री क्लियर करि सारी चंती. मेंस आपण अंगर जानि चंती बहुत कम दिन रहिला. जदि आपण माने स्टिल प्रिपेयर करिया के चाहौ चंती 1 year वैलिडिटी सहित 8999 नै परिबे. Apart from that, the optional batch जदि जो माने obviously त माने प्रिपेयर करू छ त मेंस पय एक्जेक्टली प्रिपेयर करथुवा ता सहित हने नै. हेलो आरोही. तो या सहित त माने द ऑप्शनल बैच को 4999 रे भी अवेल करि पारिबे. एंड एठी आपनकर कांटेक्ट नंबर मेंशन करा जाय छी. कॉल करिकि आपनकर क्वेरी सॉल्व करि पारिबे. अपार्ट फ्रॉम दैट जदि आपण माने वन डे एग्जामिनेशन पे प्रिपेयर होउचंदी पीओ एग्जाम पई स्पेशल बैच रहउची प्रभा 2.0 जोटार प्राइस रहउची 1999 ओनली. एंड जदि आपण माने उत्कर्ष जोटा कि एबे जानि चंदी सीजीएल एडवर्टाइजमेंट आसी जाईची 1500 प्लस वैकेंसी आपनकर आसी छी. दिस इज नॉट ए स्मॉल वैकेंसी जोटा कि बहुत ही ह्यूज वैकेंसी आसी छी. एटलीस्ट 1.5 लाख रु अधिक पिलाट पे अप्लाई करिवे. तो आपण माने 1199 प्राइस देकी एथरे जॉइन हे परिबे. आपण माने मो कोड SBG10 भी एठी यूज करि पारिबे. चलो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल. सी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ही आनी छी. होप तुम माने पार्टिसिपेट करिवो एंड तुम माने को भल लागिवो. The first question कौन कहूची ना with reference to the biotechnology consider the following sentences. तो बायोटेक्नोलॉजी को हमें कंसीडर करिके देखिबा को सेंटेंस थ्रू राइट अछि. ना फर्स्ट कहूची जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. मते कुह आपनकर जेनेटिक इंजीनियरिंग माने त माने कोन कहउछ ना दैट इज द डेलिबरेट मॉडिफिकेशन ऑफ द डीएनए और द आरएनए. व्हाट ना द मॉडिफिकेशन ऑफ DNA and RNA. Right or wrong? Yes or no? Yes. That covers the techniques like आपण जानचंदी recombinant DNA सुनिथिबा आगुरु, gene insertion सुनिथिबा आगुरु, gene deletion हो, gene insertion हो, ए सब आपणकर कोन nothing but the gene or the recombinant DNA process और हमें कहि परिबा genetic editing or the gene editing genetic insertion. And देखो एटा त हमरा राइट स्टेटमेंट हे जिवो. एठी कोन देइची ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैन इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. हमर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बढ़ेइबा पाई ही कोथि पाई ना जेनेटिकल हमर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेइबा पाई ही हमें जेनेटिक क्रॉप्स, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीन एडिटिंग टूल्स ए सब रो फास्ट के हमें यूज करूथिले. एल्स हमें ता पूर्वरु करू नथिले. सो हमें कहि परिबा द जीएम क्रॉप्स दैट इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी वाया द प्रेट आपनकर पेस्ट रेजिस्टेंस रहउची वाया हमें कोन कहि परिबा थ्रू द बीटी कटन, थ्रू द बीटी कटन. एल्स हमें आउ कोन कहि परिबा ना थ्रू द जेते सब आपनकर हर्बिसाइड टॉलरेंस अछंती तांको हमें रिलेट करि परिबा. द स्ट्रेस रेजिस्टेंस क्रॉप से मानु को हमें यूज करूछे. बट द प्रोडक्टिविटी इंक्रीज इज बेस्ड ऑन द जेनेटिक इंजीनियरिंग टेस्ट.
तो आमे जते जेनेटिक इंजीनियरिंग इटसेल्फ हम यूज करि पारुछे ता अकॉर्डिंग आमे कहिबा द प्रोडक्टिविटी ग्रोथ आपनकर से अकॉर्डिंग कोन बढ़ी चलिबो सो एठी आपनकर ऑप्शन बोथ राइट हे जिवो सो बोथ 1 and 2 will be the right or wrong yes the GM crops are applied the outcomes and the BT cotton the golden rice the brinjal आपण ए माने सब कोन एग्जांपल नै परिबे क्लियर चलो नेक्स्ट मते कहबो मने रखि त ओपीएससी यूपीएससी सबुथिरे आपनकर एटा जेहेतु टेक्नोलॉजी सहित लिंक रहउची त एप्लीकेशन तार इंपैक्ट ए सब का आपन को मन रखिया को पड़े नेक्स्ट मते को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीएनए टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग मते कहिलो या भितरु कोटा आपनकर राइट आंसर हबो मते को फर्स्ट ऑप्शन कोन अछि ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस एटा आपनकर हबो ना नै used in the forensic science or no आमे जानि छे डीएनए फिंगरप्रिंट और फिंगरप्रिंट आमे यूज करू छे फोरेंसिक साइंस रे द क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने हैला द क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन हैला ए सबुथिरा आमे कोन ना फिंगरप्रिंट रो सहायता नउ छे कोठी कार थंब रही जाई छी या फिर फिंगरप्रिंटिंग रही जाई छी आमे ता अकॉर्डिंग कोन ना इन्वेस्टिगेट करू छे बट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नॉट लिमिटेड टू द फोरेंसिक that is only limited ki eti kon deichi DNA fingerprinting is used in forensic science yes but this is not limited option B kon kahichi na that is eta apan kara right he jibo DNA fingerprinting can establish biological relationship एटा कोन आपनकर रिलेशनशिप बायोलॉजिकल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करूची कि यस कारण आपनकर पैटर्निटी हैला मैटर्निटी टेस्टिंग हैला एटा तो या द्वारा होची इवन द इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स भी एथुर आपनकर जाना पड़ी जाउची सपोज आपनकर के काली के आसी कि कहिला कि मु तम छियो कि मु तम पुओ तमाने मना करियो संगे संगे डीएनए टेस्ट हे जिवो तो एगुडा सब आपनकर कोन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैला ए सब आपनकर कोरिलेटेड विथ द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप विथ ईच अदर तो हमें कहि परिबा बोथ द ऑप्शंस आर राइट बोथ 1 and 2 yes or no the DNA profile is unique हने नै को but it used आपनकर वैरायटी जगह रे कोर्ट्स रे भी केस हुए कोर्ट रे केस हुए इमिग्रेशन से आपनकर दरकार हुए डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन रे भी यूज हुए सो हमें कहि परिबा द राइट आंसर कोन हबो बोथ राइट आंसर हबो कि ऑप्शन डी तो छाडी दे ताको नाइदर तो बिल्कुल हबनी तो राइट आंसर एठी आपनकर कोन हबो so both 1 and 2 will be the right one next mate ko the option C is the right with reference to nanotechnology acha nanotechnology upare tike asichi question mate according kahibo so with reference to nanotechnology consider the following sentence first कहला nanoparticles have high surface area to volume ratio मते कुह मु तमाने को पढैथिली जो माने आप पिला थिबो से माने मे बी आंसर जानिचो बट मते कुह nanotechnology option 1 जोटा कहूची nanoparticles have the high surface area to the volume ratio eta habona nai ko yes because high reactivity ruhe unique optical and the electrical properties with asayda ruhe but eta apan kara right heisibo hona nai ko option 2 hoji nanotechnology has applications in drug delivery system तो drug delivery system ने apan kara nanotechnology किछि यूज रहउछि कि yes guys that also targeted the drug delivery कोना जेंति कि कैंसर ट्रीटमेंट पे apan kara nanotechnology रे यूज होउछि that but based on the nano science रो कोन और nano scale properties according हमें ताको यूज करू छे तो both 1 and 2 एठी भी राइट हे जिवो so the liposomes हैला the nano carriers हैला या according हमें कहि परिबा the property enables according to the application status next देखो so option C statement 1 is correct and statement 2 is also correct next mate को consider the following statements about CRISPR-Cas9 अच्छा CRISPR-Cas9 तो मानु कहितली these are what now these are the gene editing tool कोन नाम जीन ने किछि डिफेक्टिवनेस रहितले CRISPR-Cas9 थ्रू रे हमें कोन जीन साइलेंसिंग करि पारु छे और जीन टा को हमें एडिट करि कि गोटे हेल्दी जीन को गोटे डिफेक्टिव जीन जगह रे हमें इनपुट करि पारु छे जोटा कि हमर एग्जैक्टली सिकल सेल एनीमिया रे यूज है कि तारो ट्रीटमेंट बाहरी जाई छी बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन कोन पचारु छी फर्स्ट सेंटेंस टा टिके पढी देबा CRISPR-Cas9 नो ना कहिला इट इज अ जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी वेरी गुड परफेक्टली राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पचाला एटा आपनकर जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी दैट डिराइव फ्रॉम द बैक्टीरियल इम्यून सिस्टम रो आपनकर डिराइव हे जेनेटिक जीन एडिटिंग टूल ऑफ द CRISPR-Cas9 देन देजी इट अलाउज प्रिसाइज मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए तो मते कुह द प्रिसाइज एडिटिंग यूजिंग द गाइड आरएनए दैट इनेबल्स द जीन कोन जोठु दरकार हमें ताकू नॉकआउट करि परिबा ताकू करेक्शन करि परिबा एडिट करि परिबा और रिप्लेस करि परिबा विथ अ हेल्दियर जीन rather than the defective gene we can cut and throw it out
सो आमे कहि परिबा बोथ द ऑप्शन एठी राइट हे जिवो हो ना नै को अरे आंसर दियो तो पार्टिसिपेट तो करो खाली मुक्कंग भले सुनुछ कोन so because CRISPR-Cas9 is a revolutionary technology widely recognized and used for genome editing, also referred to as the gene editing. It was adopted from a natural bacterial immune system for this purpose. Next question mate kuha with reference to bioinformatics. kon kahila with reference to the bioinformatics question eti pacharichi. तो मते को बायोइनफॉर्मेटिक्स अकॉर्डिंग कौन होबो राइट आंसर फर्स्ट कौन देछि ना इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी तो एटा अपन कर राइट होबो कि मते कुह जेते बेले अपन मानकु बायोइनफॉर्मेटिक्स कथा पचारि देला दैट यूज द कंप्यूटर्स that use the algorithms that also use the AI in the biology that means the data storage and the data analysis process ye apanakar karibo that means it involves the application of computer technology in biology that's always right then kon kahila it is used in genome sequencing analysis mate kuha genome sequencing analysis re eta apanakar use hobo ki genome sequence requires what na data assembly kariba darkar आपनकर एनोटेशन भी दरकार सो हमें कहि परिबा कि इम्पॉसिबल विदाउट द बायोमेट्रिक्स तो एठी कोन हे परिबो ना बायोमेट्रिक्स सहित जेहेतु एटा हे पारुची बायोइनफॉर्मेटिक्स बिना आपनकर जीनोम सीक्वेंसिंग हे परिबोनी सो इट इज यूज्ड द जीनोम सीक्वेंसिंग एनालिसिस सो बोथ 1 and 2 विल बी द राइट वन तो जीनोमिक्स तो कोन ना आपनकर द वर्ड मने पनु टिके proteomics the genomics the proteomics the personalized medicine ए सब आपनकर आसी जीवो कोथिरे ना द बायोइनफॉर्मेटिक्स रे आसी जीवो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन चला मते कुह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आईपीआर तो मानु के बे जस्ट आईपीआर एप्लीकेशन ने सारी छी तो मते कुह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अकॉर्डिंग कोटा राइट आंसर हबो पढिबो तापर कहिबो एठी कोन देजी फास्ट ना ट्रेडमार्क्स प्रोटेक्ट द ब्रांड आइडेंटिटी सपोज आप मु एबे गोटे ब्लेजर पिंदिची वैन्यूशन रो आफ्टर दैट तमे माने आसी कहबो कि वैन्यूशन रो लोगो थाओ वैन्यूशन रो लोगो नै कि हमें अलगा गोटे को ब्रांड रो सपोज एलेंसोरी रो अछि ता देहर हमें मारी देबा तो एठी आपन को कोन ना ब्रांड अगेंस्ट पेटेंट एक्ट आपन क्लेम करि परिबे ना नै मते देखो यस बिकॉज़ ट्रेडमार्क से सेटा जे कि प्रोटेक्ट करे आपन कर ब्रांड नेम को ब्रांड लोगो को ब्रांड रो स्लोगन जदी किछ लेखा हेसी इवन ताको भी एग्जांपल आपन नै परिबे द नाइक रो लोगो एग्जांपल आपन माने परिबे पूमा रो लोगो एग्जांपल आपन नै परिबे इवन द वैन्यूशन और द एलेंसोली रो लोगो सो एटा आपन को राइट हे गला देन कोची ट्रेडमार्क्स प्रोटेक्ट द साइंटिफिक इन्वेंशन मते को ट्रेडमार्क आपन को साइंटिफिक इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करूची कि नो तो आपन को साइंटिफिक इन्वेंशंस को किए ना ट्रेडमार्क नहीं बट पेटेंट आपन को करिवो तो याकू आपनकर किए स्टोर करके रखुची ना पेटेंट इंस्टेड ऑफ द ट्रेडमार्क सो राइट आंसर एठी कोन हबो ना ओनली वन ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट द साइंटिफिक इन्वेंशन नो पेटेंट कोन प्रोटेक्ट करके रखे साइंटिफिक इन्वेंशंस को नेक्स्ट क्वेश्चन मते को विथ रेफरेंस टू कॉपीराइट को हम टिके रेफर करिबा ता अकॉर्डिंग आंसर देबा हैला मते कुह कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स द लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क तमानु कहछि बार बार आपनकर कहा अगेंस्ट रे कॉपीराइट लागी परिबो ना आपण जदी कोनोसी बुक्स गोटे ऑथर चोरी करी ता ना बदल रे आपनकर ना रे पब्लिश करूसंती जदी किछि म्यूजिक आपण पब्लिश करूसंती जदी किछि फिल्म पब्लिश करूसंती इंस्टेड ऑफ जदी आपण किछि सॉफ्टवेयर चोरी करी के आपनकर ना रे सेटा को पब्लिश करूसंती इन दिस केस आपनकर कॉपीराइट लागी परिबो these are the कोन ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन कोन ना ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन जोटा कि कॉपीराइट क्लेम हे जिवो रेस्ट होइला तो एटा आपनकर राइट हैला मते को कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज अनलिमिटेड इन ड्यूरेशन मते को कॉपीराइट प्रोटेक्शन कोन आपनकर अनलिमिटेड की नो कॉपीराइट इज आल्सो टाइम बाउंड केमिति ना यूजुअली हमें जानि छे लाइफ ऑथर जे पर्यंत जो बंची माने जीवित अवस्था रे अछंती तांको लाइफ स्पैन पर्यंत सेटा तांको को बिलोंग करा जाय बट इंडिया रे ता सहित टिके 60 इयर्स गोटे ऐड कर दिया जाय कोन हेची ना लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर आफ्टर हिज और आफ्टर हर डेथ तो एटा ओनली कोठी ना इंडिया रे ऐड करा जाय छी क्लियर सो या अकॉर्डिंग कोन आपन कर ये भूल हे गला सो ओनली वन विल बी द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन मते को consider the following statements about the open source software अच्छा open source software according मते कहिलो कोटा आपनकर राइट सेंटेंस हबो the first
source code is freely accessible. Source code कौन आपनकर freely accessible की मते कुआ source code is freely accessible or no? Yes, because आपण मान जानि समझे the Linux is the free software. तो Linux है perfect example of the source code. The Linux, the Mozilla Firefox सुनी थी Firefox का Mozilla रा तो याकू आपण मान नहीं परिबे example so it is sentence 1 right हे गला then कहै open source software discourages the innovation. अरे यार open source आपनकर encourage करे innovation को से केबे discourage करेबो नहीं because community collaboration एठी हेई थाए. So या according कोन हे जिवो ना only one right हबो बाकी ऑप्शन आपनकर alternately wrong हे गला. Next मते को with reference to digital India mission को जदि हमें reference रे रखुचे को sentence ता right हबो मते एठी टिके कहिबो हैला ना it aims to transform India into a digitally empowered society. Very good. तो digital India रा mission रा कोन की digital India mission रा aim कोन ना digital governance करिबा ई सर्विसेस लोक माने को प्रोवाइड करिबा नो मैटर आपण माने केते दूर रे अछंती आपण माने डायरेक्ट गवर्नमेंट को एक्सेस करि पारुछंती ना नहीं प्रति कोण अनुकोण रे आपणकर डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करिबा ई सर्विस प्रोवाइड करिबा गवर्नमेंट रो को न्यू स्कीम आसिला ए सब विषय रे लोक माने को अलर्ट करिबा एटा ही तो रहूची डिजिटल इंडिया मिशन हन नहीं को राइट. So इथे ऑप्शन 1 राइट हे गला देन कोन कहछि ना इट प्रमोट्स डिजिटली लिटरेसी. तो ये आपनकर कोन डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करूछि कि डिजिटल लिटरेसी भाया कोन ना पीएमजी कोन पीएमजी दिशा माने पडुछि या द्वारा आपनकर प्रमोट होछि डिजिटल लिटरेसी को. Yes or no? That is the core pillars हमें कहि परिबा digital infrastructure हैला governance हैला empowerment हैला. So both 1 and 2 will be the right one. Yes or no? चलो. So both statements are correct objective of the digital India mission. Therefore the answer C both 1 and 2 will be the right one. Next मते को consider the following statement about कहा को पचाछि ना data privacy. तो data privacy को नै कि को sentence ता आपनकर right हबो मते कहिलो. Consider the following sentence about what na personal data protection is essential in digital governance. एटा हबो कि right or wrong मते कुआ that is essential for because trust हैला e governance हैला एटा को हमें जानि छे but एठी आउ कोन कहउछे एटा त आपन right हे गला the data privacy laws can impact the innovation ecosystem that make a balance between the regulation and innovation हो ना नहीं. तो data privacy आपनकर this is a law that can impact the innovation system. So both 1 and 2 will be the right one. बुझा पडुछि ना नाही मते कुहो. नेक्स्ट क्वेश्चन को आसा मते कुहो एथिक्स ऊपर कोन पचारिछि with reference to the artificial intelligence ethics consider the following statements. The AI ethics ऊपर क्वेश्चन अछि कोन अछि मते कुहो ना फर्स्ट कहला AI system should be transparent and explainable. मते कुहो AI system should be transparent and explainable. एटा हेई परिबो कि yes or no? Yes or no? कारण AI system जेति के transparent हबो जेति के explainable हबो to others सेति के हमर कोन कहबा ना trust आसीबो. So right transparency and explainability this is the main motto, this is the key role जोठे आपनकर कोन AI सब जगह रे acceptable हेई परिबो. Next कहला ethical use of AI requires human oversight. Yes or no? Human in the loop is the principle. कहि परिबा ना नहीं मते कुओ. So core AI ethics that principle is globally accepted that is कोन ना both the 1 and 2 will be the right one. Clear? Next question answer मते दियो. Consider the following statements about the automation. Quick. Automation according mate guha na automation can increase productivity in industries. Automation can increase the productivity in industries. एटा आपनकर राइट आंसर हबो कि automation ही आपनकर increase करूची productivity industries. Automation always leads to net job losses ना. Automation केबे आपनकर job loss करेनी बरम आमे कहि परिबा automation आपनकर job create करे new job create करे आमे कहि परिबा. So only one will be the right because ये आपनकर define करू नाही. Next question मते कुआ with reference to internet of things that is the IoT consider the following.
मते को फर्स्ट सेंटेंस कोन कहिची ना IoT devices collect and exchange data over network is that so एटा हेई परिबो कि मते कुह IoT devices आपनकर एटा प्रूफ हबो कि the devices communicate the data yes or no मते कुह and आपनकर ऑप्शन कोन देइछि ना IoT devices collect and exchange data over networks ये आपनकर निहाती नेटवर्क ऊपर डिपेंडेंट IoT devices without data रे आपनकर ये पॉसिबल नुह यूजेस IoT has applications in smart cities and agriculture yes smart cities and agriculture रे भी यार रहिछि so both the options will be the right one both the options will right see next mate को consider the following statements regarding the big data according mate कहिलो को sentence आपनकर right हबो option 1 कोन कहूची ना that helps big data analytics helps in policy formulation एटा आपनकर हेई परिबो कि मते कुह देखो big data कोन कहूची ना that helps the policy making जेमिति कि आपनकर कहिबा कि that evidence based governance आपनको प्रोवाइड करूची गवर्नेंस रे आपनकर ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करूची सो दैट लोक माने ट्रस्ट करिवे देन कोन देछि तो ये तो राइट हे गेला बिग डाटा ऑलवेज एंश्योर द डाटा प्राइवेसी ये कोन ऑलवेज एंश्योर करूची कि देखो डाटा प्राइवेसी दिस इज अ चैलेंज दिस इज नॉट अ गारंटी एट ऑल तो चैलेंज डाटा प्राइवेसी कथा त कहूची बिकॉज़ एआई को हमें पर्यंत कोन ना ताकू समस्त भलसे हमें ताकू एक्सेप्ट करी नाही तो डाटा प्राइवेसी कथा जेते पळे आसीबो त ऑलवेज ऑप्शन आपन पाखु आसीबो नाही कारण डाटा प्राइवेसी आपनकर कोन ना दिस इज अ चैलेंज तो एठी ऑप्शन रॉन्ग हे जिवो ओनली वन विल बी द राइट वन नेक्स्ट मते को now with reference to cyber security consider the following statements मते को फर्स्ट कोन देछि ना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज vulnerable to cyber attacks एटा हेई परिबो कि फर्स्ट ऑप्शन कोन देला ना critical infrastructure is vulnerable to cyber attacks yes critical infrastructure always in the risk the cyber warfare can have national security implications yes cyber warfare आपनकर कोन national security implications रुहे cyber warfare affect the sovereignty so yes ये आपनकर हेई परिबो both 1 and 2 will be the right one see the critical infrastructure systems such as power grids water system and transportation networks are increasingly interconnected and reliant on digital technology making them vulnerable to cyber threats cyber warfare can have national security implications statement kon कहूची ना cyber warfare which involves using cyber attacks against an enemy state to cause damage or disruptions poses a significant strategic risk to national security next mate तमन को आउथरे कहूची उत्कर्ष बैच सीजीएल जो माने प्रिपरेशन करूचंती गाइस डू एनरोल द बैच आपण माने एठी SPG10 मो कोड यूज करी कि मोर गाइडेंस अंडर रे जॉइन हेई पारिबे दैट इज 1199 ओनली नेक्स्ट मते को कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गाइस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग कोटा हबो राइट आंसर मते क्विकली कहिलो फर्स्ट कोन कहिची ना blockchain is a decentralized ledger technology this is a decentralized ledger technology so right one blockchain data cannot altered easily blockchain में कहूचे the data is immutability तो yes ये भी अपन कर right both 1 and 2 will be the right one next कौन कहिची ना with reference to space debris consider the following statements कोड अपन का right हबल guys देखो space debris माने कौन जेते बेले लो अर्थ ऑर्बिट रे आपनकर कोन जेते बेले गोटे पाख जायका को हमें समस्त पहुंची परिबा मते कुह जदि हमें कश्मीर जाई पारुने ताहाले हमें दारिंगबाड़ी जाई पारु छ नै जदि हमें कश्मीर जाई पारुने तो ओडिसा रा कश्मीर दारिंगबाड़ी को हमें भूली जाई पारु छ नै जदि सब ओडिसा रा लोक माने कहिबे हमें दारिंगबाड़ी जाई कि विंटर सीजन रे एन्जॉय करी के आसीबु ताहाले दारिंगबाड़ी आ जागा रहिबो कि कारण समस्त तो रिचेबल से जागाटा आपनकर कोन ना वेरी रिचेबल टू एवरीवन तो समस्त आराम से पर्यंत जाई परिबे तो सेम थिंग होउची सेठी आपनकर स्पेस डेब्रिस क्रिएट हे गला जागा ही बचिबनी लोक माने भोजी करिया पे बुलिया पे फोटो उठाया काई जदि हमें फोटो उठाउजे पहाड़ रे पछपटे हमर लोक गदा गदा आसी जिवे तो सेम थिंग आपनकर स्पेस डेब्रिस स्पेस रे क्रिएट होउची जते बेले कि लो अर्थ ऑर्बिट रे आपनकर सैटेलाइट्स माने लॉन्च हे जाउचंदी कारण सबटु कॉस्ट कम रे सैटेलाइट हमर लो अर्थ ऑर्बिट पर्यंत लॉन्च हे पारुची तो जते बेले सबटु कॉस्ट इफेक्टिवली हमें लॉन्च करछे सैटेलाइट्स को तो स्पेस डेब्रिस आपनकर स्पेस रे दैट मींस लो अर्थ ऑर्बिट रे क्रिएट हे जाउची तो ए लो अर्थ ऑर्बिट और द स्पेस डेब्रिस को नै कि कोटा राइट हबो मते दिके हु
कौन कहिछि देखो आसो so space debris poses risk to the operational satellite yes doubt space debris create habo seita ta apanଙ୍କର risk factor आसी जिवो then international cooperation is required for the space debris mitigation yes so both 1 and 2 right आपण माने इंटरनेशनल मार्केट को जाई कि परस्पर सहित कथा हेबा निहाती दरकार कि पर ईयर पर मंथ या फिर 5 इयर्स रे थरे आमे केति की रेगुलेशन रहिबा दरकार स्ट्रिक्टनेस रहिबा दरकार कि आमे केति की सैटेलाइट लॉन्च करबा अननेसेसरी अरे मते আজি अर्थ को ऑब्जर्वेशन करिवार अछि चलो सैटेलाइट लॉन्च करो अरे मते गोटे नेविगेशन पर्पस रे लॉन्च करिवार अछि चलो नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च करो मते गोटे कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करिवार अछि चलो करो तो एते सब सैटेलाइट जेतबे लॉन्च हेइ जिवो तो आपनकर स्पेस डेब्रिस क्रिएट हेइ जिवो तो या पय आपनकर कोन ना सब कंट्रीज माने बसी की गोटे मीटिंग करी की एग्रीमेंट करबा दरकार जेमिति आपनकर अंटार्कटिका रीजन रे कोनोसी स्पेस स्टेशन बसिया पूर्व एग्रीमेंट रे साइन होउथला तो सेमिति आपनकर स्पेस डेब्रिस पय भी करबा दरकार that's my personal opinion rest up to the government next as तो मते को consider the following statements कोन कहिछि about India space sector reform India रा space sector reform को नै कि मु कहिबे the private sector participation has been allowed in the space activities देखो space activities रे आपनकर private sector आगुरु allow थिला but nuclear technology रे allow नथिला but एबे शांति बिल पास हेछि जोथरे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रे और न्यूक्लियर सेक्टर रे प्राइवेट पार्टिसिपेशन ऐड हे जाइछि अंडर द शांति बिल आगुरु एटा बैन हेकि थिला एंड केते परसेंट आपनकर एफडीआई अप्रूव हेछि ना 49% एफडीआई आपनकर अप्रूव हेछि और 51% गवर्नमेंट ता हाथ रे रखिछि एंड एथिरे आपनकर कोन ना आपनकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जोटा को हम एसएमआर कहूचे एटा भी बहुत संख्या रे तयारी हेबार चांसेस अछि इंडिया भीतर तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हैज बीन अलाउड इन द स्पेस एक्टिविटीज एटा बहुत आगुरु अलाउ करा जाइथिला प्राइवेट पार्टिसिपेशन हैज बीन अलाउड अप टू 70% आपनकर अलाउ हे जाइथिला देन मते को इन स्पेस एक्ट एज अ रेगुलेटर एंड फैसिलिटेटर इन स्पेस आपनकर कोन एक्ट करे ना एज अ रेगुलेटर गवर्नमेंट तरफ आपनकर की गोटे ऑथराइजेशन बॉडी की गोटे रेगुलेटिंग बॉडी थिला दैट इज द इन स्पेस सो बोथ 1 and 2 विल बी द राइट क्लियर नेक्स्ट चलो तो एटा केबे हेतिला इंडिया रा न्यू स्पेस पॉलिसी गाइस 2022 और 23 टिके चेक कर दबो 22 और 23 इंडिया रा न्यू स्पेस पॉलिसी लॉ आसीथिला आई थिंक 22 चलो नेक्स्ट मते को विथ रेफरेंस टू बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इन इंडिया विथ रेफरेंस टू बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन इन इंडिया कोटा हैव राइट आंसर को Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) regulates the GM crops. Or biotechnology regulation considers environmental and health impacts. What will be the right answer? Quick. With reference to the Biotechnology Regulation Act, जेतेबेले Biotechnology Regulation Act कथा पचारि देला ताहाले हमें राइट आंसर एठी कोन मारिबा मते कुह ना फास्ट आपनकर GEAC सीए ही आपनकर रेगुलेट करूची जीएससी कोन जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी आपनकर जीएम क्रॉप्स को रेगुलेट करूची जेमिति कि बिट्टी कॉटन ओनली जीएम क्रॉप जोटा कि इंडिया रे अप्रूवल मिलिची रेस्ट ऑल आपनकर गोल्डन राइस हैला आपनकर द वाइल्ड ब्रिंजल हैला एगुडा को सब आपनकर पर्यंत अप्रूवल मिलिनी तो एटा को रेगुलेट किए करूची ना जीएससी देन रहिला बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन कंसीडर द एनवायरमेंटल हेल्थ इंपैक्ट यस तो बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेशन कहा अकॉर्डिंग हुए ना आपण मानकु जदी अप्रूवल दिया गला जे कोनोसी बायोटेक्नोलॉजी न्यू इन्वेंशंस को ताहाले सेथिरे कोन एनवायरमेंटल इफेक्ट पडुची ताठो अधिक कोन हेल्थ ऊपर इफेक्ट पडुची ता अकॉर्डिंग आपनको परमिशन मिलिबो एट दैट पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री ठीक अछि नेक्स्ट चलो मते कुह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बायोएथिक्स अच्छा बायोएथिक्स माने कोन बुझो या अकॉर्डिंग मते कुह कोन हबो ना बायोएथिक्स डील्स विथ द एथिकल इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द बायोलॉजिकल रिसर्च यस बायोलॉजिकल रिसर्च रो आपनकर जहा भी एथिकल इश्यूज आसीला सेटा आपनको परमिशन मिलिबो न मिलिबो सेटा आपनकर की डील करे ना बायोएथिक्स सेटा डील करे then what deals with the option 2 bioethics is irrelevant in medical research no तो bioethics आपनकर कोन relevant की ना एटा somehow हमें कहि परिबा relevant हुए and somewhere it is irrelevant तो always एटा irrelevant हमें कहि परिबा नाही that is completely wrong so एठी कोन हबो ना only one satisfy the answer next mother को statement 1 is correct statement 2 is incorrect because bioethics is highly relevant in the medical research in fact medical ethics is a central
component or a subset of bioethics. Ethical conduct in medical and biological research, including the human and animal experimentation, is a core area covered by bioethics. Next mate kuh, with reference to nanotechnology risk, consider the following sentences. kahaku kohichi na nanotechnology ra risk ku nei ki mate kuh, consider the following sentences. First one, nanoparticles may pose health risk due to high reactivity. Is that right? मते कुह हाँ ना नहीं मते कुह कौन हबो ना हेल्थ रिस्क आसे कि नानो पार्टिकल्स केते रु केते वेरी करे जति नानो स्केल ले हमें देखिबा केते ना 1 रु 100 नानोमीटर रे से वेरी करे हाँ ना नहीं मते कुह 1 रु 100 नानोमीटर रे से वेरी करे and this is a very high कोन surface reactivity. That is the ability to cross the biological barriers along with the lungs hela apanଙ୍କର blood ru brain to blood barrier eta भी create करे. So health risk apanଙ୍କର आसी जाय cellular toxicity hela apanଙ୍କର oxidative stress hela DNA damages hela ए सब apanଙ୍କର आसी जाय. So obviously apanଙ୍କର risk factor. Next कोन होची environment impact assessment is important for nanomaterials. एटा apanଙ୍କର right हबो कि मते को ये भी right हबो और wrong हबो. Quick. So the environment impact assessment is important for the nanomaterials. Yes, eta bhi apanଙ୍କର right habo. So the statement 1 and 2 both are right. The option C will be the right one. See, due to their small size, nanoparticles can easily enter and accumulate in various environmental systems. Water hela, soil hela, these all are the environmental factors. So eithire apanଙ୍କର organisms and potentially entering the food chain also emane add heithante. Next mate kuh, consider the following statements about the renewable energy technologies. The renewable energy technologies को नहीं consider कला, what will be the right answer here? First sentence कहूची technological innovation can reduce cost of renewable energy. The technological innovation आपनकर कौन cost को कमेई दबो कि कुह. Quick, the technological innovation reduces the cost via the important solar PV efficiency, the better wind turbine design, the mass manufacturing. These can be the reason for the cost benefit. And example upon the solar power tariffs. The solar power tariffs in India dropped drastically here. So the renewable energy सहित यार किछि relation अछि कि हाँ ना नहीं मते कुह. So yes, the right answer एटी कौन हबो? Both the energy storage is critical for the renewable energy integration. The both 1 and 2 will be the right one. Next mate kuha, with reference to intellectual property right and innovation. The intellectual property right, the IPR and innovation को जदि आपण माने account करूचंती तो मते कुह कोटा हबो right answer. The strong IPR design can incentivize the research and development. Right हबो option 1. Intellectual property right according मते कुह आपनकर right हबो कि देखो the strong IPR itself, that means कोन that encourage the research and development investment को. That means ये आपनकर कोन ना protect करी कि रखे the inventors को, and it was like attack करे the design investment also. Especially हमें कहि बारे this is important for the pharma sector, for the technology sector. So right answer आपनकर हे जिवो option 1. Then कहला excessive strict IPR can hinder access to the technology. एटा कोन आपनकर right हबो कि excessive strict IPR can, yes, that increase the cost, limit the technology diffusion, and that hurt developing the countries. So both 1 and 2 will be the right answer here. Clear? Next mate kuh, consider the following statement about the compulsory licensing. Compulsory licensing kono and what will be the right statement? So yes Prabhat, both haba. मते को compulsory licensing कौन कहूची? First sentence देखो. It allows the production of patented products without consent of patent holder. हाँ और ना? कोटा हमारा right answer मते को yes. The compulsory licensing allows the government to permit the production of the patented product. And हमें कहि परिबे without consent of the patent holder एटा possible नुह. So used during the public health emergencies,
तो एटा आपनकर राइट आंसर हे जिवो एंड इट इज परमिटेड अंडर द ट्रिप्स एग्रीमेंट आज्ञा हां ट्रिप्स एग्रीमेंट अंडर एटा परमिशन मिले that allows compulsory licensing under the article 31 under the TRIPS agreement that is flexibly for developing countries only not for the developed one clear chalo next तो मते को with reference to technology and environment कोटा हबा right answer technology and environment को relate करिकि मते कुह what will be the right answer here quick फर्स्ट सेंटेंस पढुची ठीक है रेक्टिफाई करो निजे निजे टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन पॉल्यूशन मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी आपन को हेल्प करि परिबो कि यस जदि आपनकर सेंसर्स लागुची सैटेलाइट्स लागुची एआई मॉडल्स माने सब इन्वेंट होउचंती धीरे धीरे आपनकर कोन एई पॉल्यूशन को ट्रैक करिबा लागि एंड 2070 सुधा हमें कोन ना द कार्बन एमिशन हमर फ्री हे जाइथिबो क्लियर तो मते कुह ऑप्शन 2 टेक्नोलॉजी एडॉप्शन हैज नो एनवायरमेंटल फुटप्रिंट एटा आपनकर राइट हबो कि yes or no this is incorrect because the technology production causes the resources extraction energy consumption so it appear right hapani only one will be the right one see statement 1 is correct 2 is incorrect next mate ko consider the following statements about green technology ya bhitru mate कहले green technology को consider karo and which sentence will be the right one tell me right way quick now green technology according mate ko the green technologies aim at sustainable development the green technologies aim at the sustainable development in reduces the carbon emission in resource efficiency the example अपन माने solar energy को नहीं परिबे होना नहीं मत देखो solar energy the EVs the electric vehicles अपन कर day by day generate होची new आसुची so that can lead to a sustainable green technology towards then mate kuha option B green technologies are always costlier than the conventional technology छु आपनकर सब बेले green technology अधिक costly आसे हां ना नाही मते कुह so the many green technologies हमें कहि परिबे are cheaper in the long term यदि हमें इनिशियल देखिबा आपनकर इनिशियल वैल्यू सब बेले अधिक होइथाय whereas यदि लॉन्ग टर्म पई देखुचे ताहले दिस इज नो so both 1 and 2 कोडे गला green technologies are always costly not always costly तो right only one next मते कुह with reference to defense technologies mate kuho with reference to defense technologies koda have a right answer quick now defense technologies and indigenization kon kahuchi indigenous defense technologies enhance the strategic autonomy so ita right answer haba ki yes the strategic autonomy eta reduce korchi vulnerability to the sanctions important during the conflicts period so eta apankara right hei jibo then kon कहूची ना defense indigenous reduces import and dependency both are the right one so option C next mate को consider the following statements regarding the कोन ना dual use technologies so dual use technologies kon अछि and consider the following sentence and what will be the right one what which sentence satisfy the questions demand mate को quick ना dual use technologies kon कहूची ना dual use technologies have both civilian and military applications dual use technology kon both rakhibo ki yes the dual use technologies have the civilian uses and have the military applications that means in dual the dual examples apan mane paribe drones ku and nuclear energy ku so yes sentence 1 satisfy the questions demand next sentence padha kon कहूची ना dual use technologies require the export control mechanism yes or no yes it requires the export control because the risk of misuse the proliferation concern तो ए अकॉर्डिंग हमें कहिबा आपको आपनकर कोन कंट्रोल रखियो दरकार so both 1 and 2 next question को with reference to science diplomacy कोन कहूची ना science diplomacy को आपण माने कंसीडर करंतु with reference to the science diplomacy मते फर्स्ट सेंटेंस पढा the scientific collaboration can strengthen international relations so say strength करूची कि international relation yes this गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट जे कि आपनकर बिल्ड करूची ट्रस्ट को तो ट्रस्ट लेवल के बिल्ड करूची दैट फैसिलिटेट्स द कोऑपरेशन आल्सो एग्जांपल्स अपन नहीं परिबे क्लाइमेट रिसर्च को एग्जांपल अपन नहीं परिबे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेस मिशन को देन तो एटा आपनकर राइट हे गला देन कहूची साइंस डिप्लोमेसी हैज नो रोल इन ग्लोबल चेंज एटा तो पूरा भूल हे गला साइंस डिप्लोमेसी केमती ग्लोबल चेंज ग्लोबल रे केमती रोल प्ले करिबा नहीं दैट इज इनकरेक्ट अपन जानि जंती साइंस डिप्लोमेसी हेल्प्स टू एड्रेस केमिति क्लाइमेट चेंज रे हैला आपनकर पेंडेमिक्स टाइम रे हैला फूड सिक्योरिटी को नेकी हैला सो एठा आपनकर कोन हबो ये रॉन्ग हे गला ओनली वन विल बी द राइट वन
See, the 1 is correct, 2 is incorrect. And the last question mate answer diyo. Consider the following statement about the emerging technologies governance. Emerging technologies governance according mate कहले कोटा right answer हबो. First sentence कौन कहूची ना governance frameworks are needed to regulate emerging technologies. Yes or no? Yes, biotechnology hela, data technologies hela, याकु तो आपनकर govern करिया को पड़िबो. Ethical, legal and social implications must be considered. मते कुह the ethical, legal, social implications जोटा कि ELSI बोली हमें जानी छे. These are must be followed or not? Yes, that must be considered because of the privacy, because of the biasness, because of the accountability. So the responsible innovation requires both of the option right. See, the option 1 and 2 both are correct. So again कहूची one day examination ପାଇଁ जदि आपण माने preparation करूछंती CGL batch नेबा को interested अछंती ताहाले 11 double line सहित आपण माने CGL उत्कर्ष batch join करि परिबे. else आपण माने महात्याक भी नै परिबे 34 double line यार validity आपनकर केते रहउची ना 1.5 years 1.5 वर्ष पर्यंत आपनकर यार validity रहउची. and ए क्लास रो कमेटी के लेट रासला प्रभात क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हेतिला. तो एटार स्कैनिंग आपण माने पाई जिबे टेलीग्राम चैनल स्कैन करंतु वेदांग सिविल सर्विस रे आपण जॉइन होंतु सेठी आपण माने पीडीएफ ए क्लास रो एंड रे पाई जिबे. एंड आपण मते यार कमेंट सेक्शन रे जणांतु आपण को मेंस पर्सपेक्टिव रो माने थ्योरी बेस्ड क्लास दरकार या फिर एमिति एमसीक्यूज राउंड ऑफ क्वेश्चंस दरकार. थैंक यू सो मच. आपण जदि टिके कंसंट्रेटली देखिबे ताहाले क्लास बुझी परिबे. एल सब जिंस आपणकर माइंड रे बाउंस हे जिवो देन आपण माने पछरे मते भूलते. Thank you so much. Have a good night. Take care of yourself. But first of all, do prioritize your parents. This would be your first priority. No one else in the world. Thank you so much. Ma'am, theory definitely. Next class will be your theory class. Bye bye. Take care.